So good morning, I am Abhishek. I am from GIFT SEZ Online and associated 10 years. So I'll guide you through Form FA. So all participants aware about the format or all are new? Some of you might have filed manual Form FA and got the manual LOA also. So how many have already got the LOA? Prakash, any idea? Abhishek, I'll update you. This is only for the unit who has filed form FA manually. Okay. अभी first training session है. So based on that, we will now in the second phase, that is ये week के अंदर ही पूरा all units में commonly circulate कर लेंगे for another training for form FA, Okay. Okay. including IFSC officials and all that. जो भी हाँ, हैं उनको भी ले लेंगे next उसमें. ठीक है, ठीक है. Okay, fine. चलो. So is screen visible? Yeah, नहीं, yeah, now it is visible. Yeah, okay. So what users will have to do now? They will have to click. They will have to first go to SEZ Online. This is the trial site, so ignore this pilot word. It will be sezonline.ndml.co.in, or you can go to SEZ Online homepage and there is a login button there. You go to homepage and you can click on user login. Then you can click on setting up new SEZ unit regularization. So in this step you have to create the user ID. Please ensure that this user ID is assigned to the person who will be looking after all administrative aspects and the person who has the authority to operate the account. So you will select SEZ unit developer as you will be selecting unit. Create the user ID details. User ID, the criteria is mentioned, password. You have to upload the photograph. You have to attach PAN copy, upload scan image of PAN, attach it is applicable if it is already issued, attach it is company's letter of authorization, it is optional that to operate the account. Then phone number, fax number, email ID. And digital signature is the most important thing because you will be submitting the application through using digital signature certificate. So you have to ensure that the correct digital signature serial number and correct authority is matched. For example, VeriSign, uh, then e-mudra. So you have to exactly match the correct serial number and certifying authority. So assuming that this is self-explanatory form, so once you capture all this information, I'll show you how then you will have to log in. So the next step would be you will have to verify your email ID and password. So the email ID and password, email ID and a phone number, email ID and phone number which you see here. The one you capture, once the user ID is created, you will be routed to a screen to verify user ID and password. Give me a minute, I'll show you the screen. Give me a minute. नीरज स्क्रीन भी गया और आपका आवाज भी गया. अभिषेक जी. हाँ हाँ 2 मिनट रुकना, मैं एक स्क्रीन दिखा रहा था तो मैंने ही बंद किया था. So once you are now visible, hello. Yes, it is. Yeah, it is visible now. So after filling this information, you will have to mandatorily verify your email ID and
mobile number. Can you see the screen? Yes. After user ID is created and you log in, you will have to first verify email address and mobile number which you captured at the time of user ID creation. यहाँ पे यूनिट्स आर फेसिंग दैट ओटीपी ईमेल में नहीं आ रहा, तो उसको व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो डोमेन के बेसिस पे व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है, वो कंपनी डोमेन है ना। हाँ हाँ That is, तो हम लोग पहले ही कर लेंगे, इनसे लिस्ट मुझे मिल जाएगा ना हाँ, ईमेल आईडी। पहले ही तो मैं कर दूंगा। कंपनी का ठीक है। डोमेन मिलेगा ना, फॉर एग्जाम्पल gift.com जो @ होता है वो। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे वो वेरीफाई करना है। So ensure that your email ID and mobile number is verified. Otherwise, we will not be able to proceed in some of the action. So assume that you have created. इसमें कुछ डाउट है? ये स्क्रीन में कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कुछ है नहीं। डेट ऑफ बर्थ क्या रहे, डेट ऑफ बर्थ जो आपने बोला वो कहाँ किसका डालना है? इट्स जो इंडिविजुअल। कुछ इतना ये है, मतलब जो पर्सन कर रहा है उसका डाले, इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे यू हैव टू फिल द बेसिक डिटेल्स ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन हु इज हैविंग द डिजिटल Authorized person. सिग्नेचर। Yes, yes, correct. ओके, Or the person who is authorized by the concerned authority in the company to proceed with registration. राइट। That's why letter of authorization is also. It is another person from admin department. So ओके, it is better. So assume that you have filled this user ID is created. You verify email ID and password. You will go to you will log in. Assume I have created a user ID. यहाँ पे डालो। So you will have to click on new unit application. Okay. First ensure that your email ID and mobile number are verified. If it is not verified, it will get that notification to verify it. So you will see the form. You have to select type of unit as IFSC. You will get the drop down here. So you will select IFSC. You will select company code. Could be you can make your own company code. It is, for example, if it is say SBI, so you can keep SBI 001 or like that. That's 11. Capture the name of applicant from select GIFT SEZ GIFT SEZ from here. GIFT SEZ. IC कोड नहीं रहेगा तो you select no and put the reason applied or it is applied under processing or something. Capture your company PAN number. Capture registered address because you have not yet set up in GIFT IFSC, so you will select capture the registered address. Capture these are the fields in Form FA which is notified. Capture name of the bank, branch, city, account number, constitution. You can select proprietorship, government undertaking, whichever is applicable. Major industry will be locked to IFSC. Then you select minor industry, IFSC, capital market, IFSC insurance office, IFSC insurance broking office. These fields were given earlier to IBU. Other, it is other to select other. Mode of payment. It is there as part of notified format. Capture the amount, transaction reference number and date, and save the details.
So when you are when you are going to fill this page on the first attempt, you will not see this other tab, director, item, investment, infrastructure. This you will not see. You will see only general tab. You have to click on save. अभिषेक जी, इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है क्या अभी? नहीं अभी तो नहीं होगा क्या, बट सिंपली वो फॉर्म इतना मेजर छोटा सी सा है। हाँ अरे नहीं, पर उसके अंदर सी फॉर्म एफ आप देखोगे तो उसमें मेजर इंडस्ट्री और माइनर हाँ, इंडस्ट्री वो नहीं लिखा है। एक्सीडेंट ऑनलाइन, बट एक्सीडेंट ऑनलाइन का पार्ट तो है ना, उसको तो वी हैड टू मर्ज। तो तो उसको मैं आपको फॉर्म देखोगे तो वो फॉर्म ए पे नोटिफाइड ही आएगा, बट ये हाँ, एग्जिस्टिंग पर है। आपने मैंडेटरी किया हुआ हाँ है, बट इट्स उसमें रेड अदर्स एस्टेरिक सिलेक्ट लिखा है। करेंगे ना, इफ इट इज नॉट रिलेवेंट अदर्स तो कर ही सकते हैं। ओके, ठीक है। Then select service export, so lock, it will be lock status, service export applicable to unit or not. Once you save it, system will generate a unique request ID. The ID request ID which you see 1124 4 times 03962, a unique distinct request ID will be created for unit. So for any correspondence with IFSC administrator or with Accident Online team for any queries, you will have to code this request ID. वेरी Once you save, इंपॉर्टेंट। once you save this information, now assume that your internet goes down or you are not able to proceed due to some reason, you can directly log out and you can continue from where you left on last login. So you will again, once you log in, you will again click on new unit application and you will see the information which is already filled in this paper. So you need not worry if you partially save and if you don't know specific information at that point and come back later to complete it, you will be able to do it. You will not lose the information which is already filled. Then you will capture director details. So you will capture, you can add multiple if there are 5, you can add multiple directors. जो फॉर्म एफ आपने मैनुअल किया है, हाँ, सेम थिंग हैज टू बी फिल्ड ओवर same, हियर। yes, yes. डोंट चेंज इट। अगर डायरेक्टर चेंज हुआ है आपका सपोज 2 महीने के अंदर, देन यू हैव टू लेटर ऑन अप्लाई फॉर द सेम लेट, बट जो ओरिजिनल फॉर्म एफ है वही फिल करना है यहाँ पे। वही डालो। हाँ, बाद में एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द यूनिट टू ड्रॉप चैट बॉक्स में आपके ईमेल एड्रेस डाल दीजिए सो दैट अभिषेक कैन व्हाइट लिस्ट यू। डोमेन डाल देना, @ के बाद जो आता है उतना ही। हाँ जी, हाँ जी। Then you will select the service which you will be providing to the clients. SSC code is as per SSC of GSTN. You can keep TPC code. This can be in USD or currency. How much is the projected production capacity? Is how much you will be earning for next year. You will be earning. Then go to investment. You will have to capture this as per form as applicable. So you will be capturing the value in rupees lakh. System will automatically convert it in dollar. So here actually it is kept similar to format. Format. So few things we have continued, but notified format will be generated as per the format which is available. So just mention dollar conversion rate. System will automatically calculate. Details of source of finance we will capture. Remarks we can capture. Then infrastructure, land, office in square meter, number of male employees, female, transgender, total number of employees. These two are kept mandatory, but we were asked to keep this option also nowadays. Then in equity, you will mention about the authorized, subscribed, paid up capital, proposed, existing, shareholding of IFSC unit, foreign, Indian, IFSC, and total equity. Then applicant information will come. The person who is applying will be the, I think, highest authority in the leader in the company. And in this field, there are last part of the form FA. You have the free text field. You can any special feature of the project proposal which you want to highlight. Details of industrial license LOP issued. Any application submitted before is pending. Whether applicant, partner, or concern or associate concerns are being proceeded against or have been resolved. So once you fill all, these are optional. So once you fill all the options, suppose
So once you fill all the information, what you can do, you can attach your LOA copy here. Choose file already issued LOA, manual LOA, you can attach the scanned image here. And once you fill entire information, entire form is very, system will generate the form FA in notified format. So you will see the form FA as notified. I'll show you print trial button is also there. So you can take before actually submitting using digital signature, you can download form FA, verify it, and then only submit. So you can see the form FA which is there in notified format. You will see trial copy here before, because you have not submitted it using digital signature. So this is for your verification review before submission. It's self-explanatory, it is as per notified format. तो प्रकाश कुछ डाउट है इसमें? जो यहाँ का जो प्रीमाइसेस लिया, सपोज दे हैव टेकन अ प्रीमाइसेस इन BIFC 111, बराबर है? 4 times 1, वो कहाँ पे डालना है? जो प्रीमाइसेस यहाँ पे लिया आपने, जो कैप्चर किया, दैट इज रजिस्टर। एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो होता ही नहीं। नहीं होता है। आई डोंट नो। अभिषेक जी, एक चीज पूछनी है आपसे, क्या होता है यूनिट्स का ना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और यहाँ का SEZ का एड्रेस अलग अलग होता है। अभी कई बार क्या होता है, जो फॉर्म प्रिंट होता है ना, उस पे दोनों चीजें दिखती नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस दिखता है और यहाँ का नहीं दिखता है। लोगों ने रिस्पॉन्स किया था क्योंकि वो नोटिफाइड इसमें दोनों नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही है नोटिफाइड। हाँ, लेकिन इसके भारी इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर है ना यहाँ की प्रीमाइसेस का एड्रेस फॉर्म एफए के ऊपर नहीं आता है, फॉर्म के ऊपर नहीं आता है, LOA के ऊपर नहीं आता है, तो उनको GST रजिस्ट्रेशन या कोई भी चीज बाद में नहीं मिलती है फिर। बट आप इनको मुझे एक रेफर करो ना, क्योंकि ये नोटिफाइड फॉर्म का पार्ट है। इसका को बोलना है इसमें। लेकिन आप जो प्रिंट आएगा फॉर्म का, हाँ। इसमें तो चलिए आप अंदर तो आप फॉर्म के ऊपर इस पे मत आइए, FA पे मत आइए, पर जो इनपुट होता है उसमें दोनों एड्रेस अलग अलग जैसे आ जाए, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस और यहाँ का SEZ का एड्रेस, और जो फाइनल प्रिंट निकलता है, LOA का प्रिंट जो निकलता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो फॉर्म FA उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर्म FA के अंदर जो इनपुट्स होते हैं, जो इनपुट्स आते हैं, इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वो आपका ना, अभी फॉर्म G में भी हम लोग ने रिसेंटली गिफ्ट से बिफोर इसका ग्रीन स्टेटस टू कवर वी हैड received this query, so we had responded that notified form G में भी वो नहीं है। तो आप एक फैसिलिटी है जिसके थ्रू अनदर फॉर्म में अनदर LOA अपडेटेड जनरेट कर सकते हो, उसमें वो आ सकता है। वो ऑफिशियल्स के सेशन में दिखा दो, तो ये नोटिफाइड ओरिजिनल है, उसमें तो नहीं है, फॉर्म में ही नहीं। ये कब तक इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये आई थिंक कल जाएगा, कल लाइव हो जाएगा। तो आफ्टर कल रात को हो जाएगा। ग्रेट सर। सो एनी क्वेरीज यूनिट को कुछ डाउट है? Sir, we have one query. So जिन्होंने so basically हमें ये फॉर्म FA SEZ वेबसाइट पे फाइल करना है, जिनका LOA अभी 22 मार्च को जब IFSC एडमिनिस्ट्रेटर के पास आया एप्लीकेशन फॉर्म, और फॉर्म FA इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद जिनको भी LOA रिसीव हुआ है उनको ये सिस्टम पे अपलोड करना है सारी डिटेल विद LOA अपलोड टेम्पलेट फाइल में। इज द अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? ये ऑप्शनल है, मैंने सजेस्ट किया, इट इज इजियर फॉर ऑफिशियल टू अप्रूव इट, दैट्स व्हाई यू कैन अटैच इट। अच्छा, बट इररिस्पेक्टिव फॉर्म तो फाइल करना ही है फॉर्म FA, but because for system doesn't understand system, it's a new thing, it is as if there is no unit exists in this way. आप अटैच करो तो इजियर रहेगा। ओके। और उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? वापस मतलब वापस कुछ इंटीमेशन आएगा? हाँ, आपको जब ये LOA अप्रूव हो जाएगा ना, तो एक ऑटो जनरेटेड ईमेल आएगा, योर LOA हैज बीन अप्रूव्ड करके। और हेलो
और डेवलपर को भी Yes. ईमेल जाएगा प्रकाश जी, अभी वो रिक्वायरमेंट था ना आपका, एवरी Yes, yes. आपको भी आएगा Thank you, sir. Thank और you. इसका अथॉरिटी को भी आएगा। Okay. What is the timeline to upload this on the portal? अभी ये अभी लाइव नहीं है प्रोडक्शन में, तो आई थिंक टुमारो नाइट इट विल गो, तो आई विल आल्सो स्पीक विद गौतम सर इन दिस रिगार्ड। Ma'am, I would suggest you wait for the notification to be issued by IFSC. The moment they issue the notification, you can go live. तब तक आप तब तक you can fill the data. No, I mean, when the notification also comes, they will prescribe a certain timeline, no, for people who have already been approved on 22nd March or in April. हाँ, मैं वही for बोल रहा them हूँ, to तब upload, हाँ। कल लाइव हो जाएगा तो आप फॉर्म फिलअप करना चालू कर दीजिए। एनी स्पेसिफिक अगर कुछ गाइडलाइंस आता है कि यू हैव टू अपलोड ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो आपने फिजिकल सबमिट किए थे, वेट फॉर द गाइडलाइंस एंड देन सबमिट। फॉर्म फिल करना तो चालू कर दीजिए। इफ और अदरवाइज इफ यू कैन गेट इन टच विद इफका, और वो अगर बोलते हैं इफ यू कैन गेट इन टच एंड इफ दे से सबमिट विद ओनली एलओए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी कंफर्म कर लीजिए। इफ दे से सबमिट देन यू कैन सबमिट। Okay. ठीक है, अभी तक assume ईमेल that, एड्रेस ड्रॉप नहीं किया, प्लीज ड्रॉप ऑल द ईमेल एड्रेस प्लीज। तो ये लोग आपका व्हाइट लिस्ट कर दें, एनएसडीएल गाइस। और इसके बाद Fireflies. once you receive email, units I am saying, you have to pay registration fee payment to NSDL राइट, database management उसका limited। ट्रेनिंग सेशन अभिषेक जी ये वीक में ही रख लेते हैं। वी कैन हाँ, शेड्यूल इन पेमेंट द में सेम क्या, वीक। पेमेंट तो आप यू कैन डू NEFT RTGS और डिटेल्स और नहीं, क्रिएशन ऑफ और यूजर यू आईडीज भी कैन सब ऑनलाइन कुछ पेमेंट। हाँ हाँ, वो तो अभी दिखा देता हूँ मैं, वो अभी दिखा देता नहीं, हूँ ऑफर्स 11th को वी कैन प्लान इन ऑन 10th, तो ऑल द यूनिट्स कैन ज्वाइन। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, हाँ बट हाँ उसके हाँ, बाद आपको जस्ट एक बता देता हूँ। चलिए अज्यूम ओके फिर। करो अज्यूम करो कि आपने सबमिट किया है, तो आपको सबमिट किया है और आप उसका प्रिंट लेना है सपोज सबमिशन को, तो आपको सर्च रिक्वेस्ट पे क्लिक करके, अभी इस ट्रांजैक्शन में नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी डालना है आपका, जो अभी 1124 जो मैंने बताया, और आपको जस्ट सर्च करना है, तो आपको रिक्वेस्ट आईडी दिखेगा और उसमें अभी ये तो नहीं आएगा, सबमिटेड ही नहीं है, बट यू विल सी द ट्रांजैक्शन, यू ओपन इट एंड यू विल गेट द प्रिंट बटन आफ्टर यू सबमिट। उसके बाद आपको जब भी एलओए अप्रूव हो जाएगा, व्हेन सिस्टम व्हेन इसका एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव इट, यू विल क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन फी, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन, registration fee payment link, you may either pay by NEFT RTGS or online payment facility is also there which you can use. And once the online payment, if you make online payment when success come, automatically this create admin link will be activated. Then you can keep the same user. We will share you the user ID manual, user ID creation manual also now. Then we can show the actual demo of that. So you will click on create admin link, and you can create the user ID which you created at the time of application, keep that ID as admin or create a new admin ID as well. And after that, you have to create maker and approver users. So there is a concept, we will give a detailed session on user ID creation. But there are maker checker for all the modules like LOA renewal, extension, LUT. You have to, there is a maker checker concept. So you create maker ID, approver ID. So if there are any custom transaction in which in your case, it would be rare scenario. If you are taking services of CHA, you can create user IDs for CHA as well. And most important module for you would be MPR and service export reporting form, which has to be filed through approver ID. So service export reporting form is the one where you will be declaring the services which you will be providing to your foreign client. So abhi, assume that your LOA is approved. I'll show you one more screen. Once you
Prakash ji, how many new units who have yet to file any application are in the waiting? कितना sir, Ronak? More than 40 होना चाहिए मेरे हिसाब से. Okay. Who have not filed manually also. नहीं मैन्युअली है और नहीं, अप्रूव्ड है अभी. लास्ट और 3 नहीं है वो यूएसी. जो नए हैं पेंडिंग में कितने रहे? मैं वही बोल रहा हूँ, लास्ट फर्स्ट इफ्का के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अभी हाँ। फोर्थ का भी आ जाएगा एलओए, वो भी फिजिकल Okay. है. तो सब एक साथ में करना है. नेक्स्ट जैसे ठीक। येलो इश्यूज है तो उनका भी अगेन वापस ट्रेनिंग लेना है. ठीक. So assume करो कि you have created the admin user. You have to just create admin and confirm this is my admin. You will be coming on administration maintain users link. So you will get the OTP for creation of user ID or any edit in existing information. OTP abhi this is prior. So you will get OTP on mobile number and mail ID which you verified. Through search, you can see the user ID which you have created. You can add the user ID. Again, similar form is there. You have to assign the role unit approver. Unit approver is critical for acceptance of LOA. So now the LOA is approved by DC office that you need to accept using digital signature. You have to assign the module, new LUT, update LUT, top text is won't be applicable. Say whichever modules are applicable to you, you will select. Service export is automatically linked to report. Assign digital signature. For approval, digital signature is mandatory. So assign the digital signature serial number and certifying authority, whether it is Midra, SafeScript, VeriSign. So you have to select it and save it. So this is also self-explanatory, very easy. You have to just select the role as approver or maker. Don't select admin again because you have logged in to admin ID only. So and assign the modules which you want to assign to the official. And system will create user ID. We will have another detailed section on this user hierarchy. So now I'll show you how to accept LOA. LOA can be accepted by approver ID only, unit approver. So you have to ensure that approver ID is created for acceptance of LOA. Unless you accept LOA, you won't be able to proceed. So you about LOA. So assume you have created approver ID. So you have to click on accept LOA. So you will see the form GVT is approved by DC office. This is trial link. So actual production it will happen immediately when you click on accept LOA.
So I downloaded LOA copy. So accept LOA. अभिषेक जी जीएसटी दिख रहा था अभी थोड़ी देर पहले. डू द यूनिट नीड्स टू, हाँ एलओ एक्सेप्टेंस पहले रहेगा ना, बाद में जीएसटी हाँ आएगा ना. वो तो अभी नहीं, ये पहले करना पड़ेगा. You have to click on accept LOA details and confirm it. At the नहीं, event of confirmation, system will ask for digital signature. वो समझ गया, दैट इज ओके, बट द पेमेंट कैन बी डन आफ्टर दिस, राइट? कौन सा पेमेंट? आपका एसएस नहीं ऑनलाइन को वो जो पहले पेमेंट हो करना है, जाता ना. नो एक्सीडेंट ऑनलाइन पेमेंट हैपेंस बिफोर दिस. बिफोर करना है, यूजर क्रिएशन से हाँ पहले हाँ करना है. हाँ हाँ. तो उनके ये जो एलओ एक्सेप्टेंस उनके एडमिन में ही डाल दो ना. सो ये वेरी नहीं ये इंपॉर्टेंट चेंज नहीं हो कंप्लायंस है. सकता है ये सब. नहीं ये नहीं पॉसिबल. ये अभी लास्ट, तो यहाँ अच्छा नहीं, पर पॉसिबल वो नहीं पहले है. डिस्कस हुआ था ना कि हाँ सर बट वो उसको. पॉसिबल नहीं ना. वो सिस्टम 10 साल से वो फंक्शनलिटी है. सब बाकी एक्सीडेंट के नहीं थोड़ा एनहांसमेंट करके फॉर्मेट पे अपडेट किया है. तो वो पॉसिबल नहीं है टेक्निकली. ओके ठीक है. तो यहाँ से कंफर्म करना है डिजिटल सिग्नेचर एग्जैक्टली मैच होना चाहिए. Assume that digital signature doesn't match. तो आपको करना क्या है? You have to go to अभिषेक जी इसमें इफ्का का लेटरहेड आएगा ना, इफ्का का नाम आएगा ना, ऑफिस ऑफ इफ्का. आप जो एलओए जनरेट हो रहा है वो तो अलग दिख रहा है, पुराना वाला है. हाँ वो करेंगे हम लोग. अभी इमीडिएटली नहीं होगा बट वही चालू है उसके साथ. यहाँ पे सपोज डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होगा ना, तो आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है. और डिजिटल सिग्नेचर मिसमैच आया तो आपको यहाँ से एडिट करना है. एडिट करके ये अलग यूजर है. हाँ एडमिन यूजर नहीं है, ये अप्रूवर यूजर है. सपोज डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है तो आपको से प्रेफरेंसेस एडिट प्रोफाइल में जाके यहाँ पे एडिट मेंटेन यूनिक यूजर्स में जाना है. तो यहाँ पे वो जो यूजर आईडी क्रिएटेड है वो ओपन करना है. डिजिटल सिग्नेचर एरर इज शोन फॉर मिसमैच ऑफ सीरियल नंबर और इशूइंग अथॉरिटी. सिस्टम विल स्पेसिफिकली गिव एन एरर. And maybe Prakash in a month or so, this application has to be initiated from IFSCA portal. Till we are ready for integration. So once they make it live, so once on the day they say from this date the application should come to their portal. Then अच्छा जो application आप राइट, उनसे नया जो ट्रेनिंग ले लो सॉफ्टवेयर बनना है अलग से. उनका. गॉट इट. आप उनसे ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिकली ये ऑटो फीड हो जाएगा once the application is submitted there. ओके राइट, तो आप उसका उनसे उसका भी अलग एक बार. ट्रेनिंग सेशन रखेंगे अपने. हाँ द मैं मोमेंट नहीं इट इज रखूंगा. लाइव. मुझे हाँ उनको आपको इफ्सका को लेना पड़ेगा. वी आर नॉट अवेयर. बिल्कुल सर. अभी नेक्स्ट सेशन में इफ्का को भी ले लेंगे जैसे ये लाइव हो जाता है. प्रोडक्शन यू विल नॉट पे.
and search. So, I'll do one thing in the next session. I'll show you the user management properly. ठीक है. So there can be more than one approver if the company is multiple having makers, multiple approvers. multiple makers can also be there. And as well as CHA can also be there. CHA means your consultant. You can create an ID for this consultant also separately so that आपका Oh no, CHA is not CHA, not consultant. CHA is only dedicated for import, export, domestic procurement, domestic sale filing. हाँ मतलब वही डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट फाइल करने के लिए दे कैन गिव इट टू कंसल्टेंट ना जैसे हाँ बट सपोज ये कंसल्टेंट नहीं होगा वो ऑथोराइज CHA का अलग लाइसेंस होता है वही कर सकते हैं मतलब एक ओके अलग फिनांस कंसल्टेंट अलग होगा ये स्पेसिफिकली फॉर कस्टम्स डॉक्यूमेंटेशन ओके कैन दे क्रिएट एन यूनिट मेकर फॉर जैसे कंसल्टेंट सब फाइल करके दे दे ऐसे हाँ उनका डिस्क्रिप्शन है वो ओके सो इन मेकर देयर इज नो डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड नो अप्रूवर only in approver the digital signature required so approver is only the person who has been authorized by the company yes yeah and if the unit faces any problem SEZ online support दिख रहा है आपके screen पे click on that SEZ online support all the contact details are available on that SEZ online support my colleague Nirav can also visit when needed that would be great Nirav are you there यस सर आई एम देयर हाँ तो एक बार विजिट कर देना नेक्स्ट वीक ठीक है सर पक्का तो एक पॉइंट रह गया था मेरा if you at the time of submission of this application through using digital signature आपको ना एक SEZ ऑनलाइन लॉगिन पेज पे जाके मैनुअल्स एंड फॉर्मेट्स डाउनलोड्स मैनुअल्स एंड फॉर्मेट्स में there is one e-lock signer. E-lock means it is mandatory for digital signature submission. तो आपको manual file format में yes हाँ हाँ बस वो तो यार e-lock super signer tool you will have to install it and run it on your machine. Then only signature will get submitted. It is in download section, manual and file format. And here you will see e-lock super signer. हाँ और ये जो अभी फॉर्म FA का मैनुअल्स कब तक वो आ मिल जाएगा जाएगा एक वीक में आ जाएगा हाँ बट मॉडल सेम है जो कुछ है मॉड्यूल नहीं है उसका भी you can refer the हाँ वो form F ज्यादा है manual नहीं also फॉर्म एफ देख के ही वही तो भरना है ये फिल एग्जैक्टली तो यहाँ पे अज्यूम करो आपने सबमिट कर रहे हो और आपको यू आर कंफर्मिंग इट एंड यू गेट एन एरर अभी ई-लॉक का एरर आएगा आपको कुड नॉट एस्टैब्लिश ई-लॉक कनेक्शन सो वंस यू इंस्टॉल इट यू विल नॉट गेट दिस एरर ओके
ये तो और सेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया। अभी डिजिटल सिग्नेचर आईडी प्रोफाइल में जाके डालना पड़ेगा ना। नहीं, वो पहले एट द टाइम ऑफ यूजर आईडी क्रिएशन ही आपको डालना पड़ता है। अज्यूम करो अच्छा, आपने गलत डाल दिया, अज्यूम करो आपने गलत डाल दिया, हाँ तो आपको क्या करना है, क्लोज कर दो। यहाँ पे एरर आएगा, सीरियल नंबर नॉट मैचिंग, इशूइंग अथॉरिटी नॉट मैचिंग। तो आपको क्या करना है, एडिट प्रोफाइल में जाना है, ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर जो वेरीफाई किया है उस पे। मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया है तो नहीं आएगा, तो यू विल हैव टू एंश्योर दैट। और आपको एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपडेट डीएससी बोलना है, और इशूइंग अथॉरिटी गलत सिलेक्ट किया था, अज्यूम करो मैंने, सेव और सेव कर, रीजन करेक्शन। तो सेम है, जो पहले था वही है, खाली थोड़ा सा जो नोटिफिकेशन है उसको उन्होंने फॉर्म पे हाँ, कर दिया। ठीक है, तो वहां पे आपको वो करेक्ट करना है उसे। राइट। सो अभी एनी क्वेरी और फ्रॉम द यूनिट्स? एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ मैं, और फिर we will enter session. ठीक है। First, you will have to create user ID as I showed you. You will have to select SZ unit here. Photo, PAN number, PAN number, digital signature are mandatory things. Assume that you this is self-explanatory. Assume you capture everything. Then you log in with the ID which you created. तो न्यू यूनिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। You will save. You have to select type of unit as IFSC. Select SEZ as GIFT SEZ. Fill all the information. Fill director details, items, service which you are providing, investment, infrastructure, equity, applicant information, and there are 4 miscellaneous information is a part of form FA which you have to capture and click on submit. You can partially fill the form, log out and log in again. The information which you have saved will be available, and you can proceed from there. You will see the form FA. You can take trial print by clicking on this button, so that before submission you can again validate the information field and click on submit. Ensure digital e-lock is installed and digital signature is correctly captured, and click on confirm. So these errors will not come, and you will get the message request submitted successfully. Once this request is submitted successfully, you can take printout by clicking on search request and capturing this request ID. You will see here, you will not see because it is not submitted. You will see the summary of the submission. You will click on this request ID which will be shown in hyperlink form. You will click on it and you will get the print button. Any doubt in this? Once it is approved by DC, once it is approved, you will get a notification email. Then you will click on registration fee payment, make the payment. You can use online payment mode also, or you can pay separately using NEFT RTGS. Make the payment entry in system. After the payment is authorized, you will click on create admin. You will get the option of make me admin or create new admin. So there are two options you will see, make me admin and or correct create new admin. You can keep the same user ID which you created as admin. If you create new admin, if you ignore make me admin and create new admin, the old ID will be disabled and new admin ID will be enabled. Then you will click on maintain users. You will see different view, maintain users. You will have to create maker and approver IDs. You will create, you will have to click on maintain unit users. You will get OTP on your verified mobile number and LID. And you will be able to add the new user. You have to fill all the information, assign role and assign functionality.
Again, if it is approver ID, digital signature is mandatory. You will have to map the same. ठीक है, any doubt? Sir, from which login ID you mentioned this will be required to be submitted? So The as I new unit mentioned, application? first user which you created, once you submit the application, you keep that user ID with you. Once it is authorized, once the LOA is approved by authority through system, you will get an email notification. Then, my question. I'll We tell you, already have the login IDs for admin, maker as well as approver. So you out are of the existing, three, then No. you have already completed this task then. no, our form FA was approved in the first USC meeting. So Okay. that's why I'm asking. The logins were already there for us. So from which ID we submit the But have you- online but FA have you- form? But your form F, it means that your form F was approved before form FA came. No. Our Then you form will not have FA maker has and been approver approved. IDs. Then how will you have maker and approver IDs? It is It is because not approved online. our first LOA was expired and we have made a reapplication for that after making No, the you will have, exit. I think that will not, that was, I think, form F which you had originally applied. So, Sir, you please listen what I'm trying to tell you. Yes. Sir, our form F LOA was taken 3 years back. So the LOA term was expired. We have made a re-entry with the form FA. That's why I'm asking, because we already have those existing login. Will they be Ma'am, useful for applying for form FA? That's what I'm trying to ask. No, it will not be. Okay, so we have to create all the new login IDs and then Yes. apply for the form F. Okay, and understood. one time registration fee payment, fees charges, नीरव जी अभी आएंगे next. Get in touch with नीरव जी, आपको कैसे पेमेंट करना है वो आपको बता देंगे. पुराना जो है वो एग्जिट हो गया है तो वो नहीं चलेगा. That is closed down. Okay. New ID, Understood. new ID create करने के बाद में that ID has to be approved by IFSC. Okay, got Then it. only you will be able to create the admin in all these things, है ना? ठीक है, समझ गया. Okay, sir. Got it. Thank you. ठीक है, प्रकाश जी चलिए. तो एक पूरा ट्रेनिंग सेशन यही वीक में कर लेते हैं, जैसे ये लाइव हो जाता है. टोटल आई विल सेंड इट टू ऑल द यूनिट्स जो अभी अप्रूव्ड हुए हैं वो भी ले लेते हैं, है ना? तो 10 तारीख को करें. I think Avinash and Ram will be conducting it. ठीक है, I'll take date from the Avinash. Okay, thank you. Thank you all for joining. Please log off. We end the session over here. Thank you Abhishek ji, thank you Nirav, thank you Ram. Thank you. प्रकाश सर, हाँ, उन लोगों को है ना, वो है ना पेमेंट के लिए चाहिए तो उन्होंने नोटिस नंबर 67 रिफर करने का बोलना. मैं आ जाऊंगा वहां पे, फिर भी इफ दे वांट टू पे इन एडवांस they need to refer notice number 67 which is an important reference link. ठीक है सर, you can ask them to refer that. I will definitely come and guide them further, but if they want in urgent, that's what I'm saying. ठीक है सर. okay fine, thank you.